Pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings. Challenges of today's world. Melting glaciers. Global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और आज मैं आपको एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के 23वें लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हर दफ़ा करते हैं, आइए आज का लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपको अपने पिछले लेक्चर का एक छोटा सा रिव्यू देता चलूँ। आई अंडरस्टैंड दैट दिस पार्ट इज़ अ लिटिल टफ, लेकिन हमें क्योंकि एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाना होता है कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इसलिए ये बाज़-औक़ात ज़रूरी हो जाता है। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको पढ़ने का मौका ना मिला हो या आप किताबों को ना देख सके हों, इसलिए ये छोटा सा रिव्यू हमें हेल्प आउट करता है कि हम अपनी पूरी स्टोरी को राइट फ्रॉम द स्टार्ट डाउन टू द एंड उसको देख सकें। और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जब ज़रा बेहतर हो जाए थोड़ा सा, तो अंडरस्टैंडिंग ज़रा बेहतर हो जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस के बारे में। पिछले चंद लेक्चर्स में हमने स्ट्रेस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा। हमने स्ट्रेस को एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा और फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि स्ट्रेस दरअसल होता क्या है। यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस के बारे में जानने की कोशिश की और जो दो डेफिनेशंस हमारे सामने आईं वो कुछ इस तरह से थी कि वो स्ट्रेस को या तो स्टिमुलस के हिसाब से देखती थी या रिस्पॉन्स के हिसाब से देखती थी। क्या आपको याद है कि स्टिमुलस डेफिनेशन क्या कहती थी और रिस्पॉन्स डेफिनेशन क्या कहती थी? ऑफ कोर्स अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम एनवायरनमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्टिमुलाई होते हैं उनकी इंटेंसिटी के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसकी वजह से हमारे बिहेवियर पैटर्न के ऊपर कोई ना कोई असर पैदा होता है। मसलन अगर गर्मी की शिद्दत बढ़ गई या गर्मी की शिद्दत कम हो गई या मौसम बहुत सर्द हो गया या साइकोलॉजिकली अगर हम एनवायरनमेंट को देखें तो हमारे बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और ड्रास्टिक चेंजेस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन किसी एक्सीडेंट में दे माइट हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स, वो किस तरह से ज़िंदगी में एडजस्ट करते हैं, इस तरह की बेशुमार चेंजेस हमारी लाइफ में होती रहती हैं। अगर हम डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी देखें तो पैदाइश से लेके एंड तक हमारी लाइफ के अंदर बेशुमार चेंजेस आती रहती हैं और इन चेंजेस की वजह से हमारे रोल्स भी डिफरेंट होते जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती जाती हैं। सो चेंज इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस एंड एवरी टाइम there is a change in our environment, some of the researchers thought that that change can be interpreted as the stress, as something that is causing stress to the individual. और स्टिमुलाई के हिसाब से जब हमने देखा तो हमें ये पता चला कि एनवायरनमेंट के स्टिमुलस के अंदर जब एकदम से चेंजेस पैदा होती हैं तो वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा टैक्सिंग होती हैं। लेकिन ये डेफिनेशन हमारे लिए इस लिहाज से मुकम्मल नहीं होती कि एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो सिमिलर चेंजेस बाज़ लोगों के लिए तकलीफ़देह होती हैं और बाज़ लोगों के लिए वो बड़ी खुशगवार चेंजेस होती हैं। मिसाल के तौर पर ऊंचा म्यूज़िक सुनना बाज़ लोगों के लिए बहुत खुशगवार तजर्बा होता है और ऊंचा म्यूज़िक सुनना बाज़ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल तजर्बा हो सकता है। जब हम स्टिमुलस के रेफरेंस से जाते हैं, स्ट्रेस को समझने की कोशिश करते हैं, तो वी फाइंड आउट कि हमारे पास एक कॉमन पैटर्न नहीं आ रहा जो सारे इंसानों के ऊपर अप्लाई किया जा सके। अगरचे हम इस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हैं। स्टिमुलस से स्टूडेंट्स जब हम आगे चले तो हमने रिस्पॉन्स की बात की कि शायद एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसकी वजह से जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं। इस किस्म के रिसर्चर्स ने अमूमन ये कोशिश की कि इंसानों के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को स्टडी करके ये पता चलाया जा सके कि इंसान जब एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, एक होमियोस्टेसिस या इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, तो वो कैसे होते हैं और जब उनकी एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आती हैं तो उनकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ पर हमने इस किस्म की एग्जांपल्स देखी कि अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएं तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो सकती है, आपकी स्किन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। इस किस्म के रिसर्चर्स अमूमन रिस्पॉन्स पैटर्न के तहत जानने की कोशिश करते थे कि स्ट्रेस दरअसल क्या है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है और इसको किस तरह से मेजर किया जा सकता है। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर भी कुछ फ्लॉज थे। यहाँ पर हमें ये पता चला कि इंसानों के रिस्पॉन्सेस बाज़ औक़ात एक जैसे होते हैं जबकि सिचुएशंस मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। मसलन अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आप बहुत ज़्यादा खौफ में हैं तो बॉडी के ज़्यादातर रिस्पॉन्सेस तकरीबन एक जैसे होते हैं।
اگر آپ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہیں تب بھی باڈی کے رسپانسز تقریباً اسی طرح کے ہوں گے. ایکسائٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا ہارٹ تیزی سے بیٹ کر رہا ہے, آپ کا بلڈ پمپ ہو رہا ہے مسلس کی طرف, اور آپ کی باڈی کے اندر ایک ایجیٹیشن ہے جو آپ کو پریپیئر کر رہی ہے انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹ کرنے میں. اب اس قسم کی اسٹیٹ آف مائنڈ کافی ساری ڈفرینٹ سچویشنس کی وجہ سے آ سکتی ہے. اسٹریس کو جب ہم اسٹیمولس اور رسپانس کے تناظر میں دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں کافی ساری انفارمیشن ملتی ہے, اور اس ویلیوبل انفارمیشن کی وجہ سے ہم اسٹریس کے بارے میں کافی زیادہ جان پاتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی کامن پیٹرن نہیں ملتا. اگر ہم اسٹریس کو ڈیفائن کریں تو ہم شاید یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریس کے اندر انوائرمنٹ کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, اور جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ مینس ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹیمولائی, دے آر ڈفرنٹ انٹینسٹیز, دے آر ڈفرنگ انٹینسٹیز, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم انسانوں کے رسپانس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوائن کر دیں تو شاید ہم پہنچ سکتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کی طرف, کہ کیا چیز تھی, وہ کاز کیا تھی جس کی وجہ سے ایک سرٹن رسپانس ایمرج ہوا ہے. اسٹوڈینٹس, جب ہم کاز اینڈ افیکٹ کو کی ڈیفینیشن سے اسٹریس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اسٹیمولس اور رسپانس دونوں چیزیں انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں. کاز اینڈ افیکٹ کو جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو وی فائنڈ آؤٹ کہ انوائرمنٹ کے اندر مختلف قسم کی چیزیں, مختلف قسم کے واقعات جو انسانوں کی زندگی میں ہوتے ہیں, انسان ان واقعات کو کس طرح سے اپریز کرتے ہیں, ان واقعات کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں. یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اس رسپانس کو جاننے کے لیے کہ کیا وہ اسٹریس میں سے گزر رہے ہیں یا وہ ایکسائٹمنٹ میں سے گزر رہے ہیں. اپریزل دراصل انسانوں کا بنیادی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے زندگی کو لیتے ہیں. جب آپ اپریزل کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دین یو کین آلسو انٹیگریٹ انڈیویجول ڈفرینسز. لیٹ اس سپوز اے اسٹوڈنٹ از گوئنگ آؤٹ فار دا پریزنٹیشن ان فرنٹ آف دا انٹائر کالج, تو شاید ان کے لیے یہ بہت ایکسائٹنگ اپرچونیٹی ہو. یہ ایک ایسی اپرچونیٹی ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, بولتے ہیں, کانفیڈنٹ ہیں, ان کی ٹانگیں نہیں کانپتی, ان کا دل تیزی سے نہیں دھڑکتا. ان صاحب کے لیے یہ واقعہ بہت زیادہ خوشگوار ہے. دراصل یہ واقعہ خوشگوار اس وجہ سے ہے کہ شاید ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے پریزنٹیشن کے لیے جانا ہے, ہی اپرائزز دا انٹائر سچویشن فرام اے ویری پازیٹیو اینگل. ہی تھنکس دیٹ دس از این اپرچونیٹی. However, there could be another gentleman who thinks entirely different way. یہ صاحب ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ آپ پریزنٹیشن کے لیے جائیں گے تو شاید ان کی اپریزل اس قسم کی اپرچونیٹی کے لیے یوزلی نیگیٹو ہو. شاید یہ سوچنا شروع کر دیں مجھے بہت کام کرنا پڑے گا, میں لوگوں کے سامنے جا کے بات کروں گا تو شاید میں صحیح بات کر سکوں یا نہ کر سکوں, یا پھر میں کس طرح کا لگوں گا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ اس اپریزل کو دیکھیں تو یہ تھوڑی سی ڈاؤٹ فل اپریزل ہے اپنی پرفارمنس کے بارے میں. جو پہلے صاحب ہیں ان کی بہت کانفیڈنٹ اپریزل ہے. اب یہ اپریزل کین بی ڈفرنٹ with reference to different individuals. So appraisal is very very important in order for us to understand the stress. Students, یہاں پر ہم نے appraisal کو دیکھا state of affairs کے ریفرنس سے, اور یہاں پہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ environment میں جب ایک دم سے changes آتی ہیں تو ایک بیلنس کی state ڈسٹرب ہونا شروع ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کا ایک بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. دراصل انسان اپنی انوائرمنٹ کا ایک پارٹ ہوتے ہیں, اور جب بھی وہ اپنی انوائرمنٹ میں اس پارٹ ایز اے پارٹ انٹیگریٹ کرتے ہیں دے فیل پرفیکٹلی ایٹ پیس. دیر از ٹوٹل ہارمنی بٹوین دیئر پریزنس ان دیٹ پرٹیکولر انوائرمنٹ بیکاز انڈیویجولس بیکم پارٹ آف دیٹ انوائرمنٹ. اور انوائرمنٹ کے اندر ساری چیزیں انسانوں کے لیے بیلنسڈ ہیں. دس از آر نارمل ڈے ٹو ڈے لائف. ہاؤیور بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیلنس ایک دم سے ڈسٹرب ہوتا ہے. سب سے پہلے جب بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی چینجز پیدا ہوتی ہیں, ہماری باڈیلی چینجز پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپریزل کی طرف چاہتے ہیں. ہم انوائرمنٹ کو اگر یہ پرسیو کریں کہ یہ چینج ایسی ہے کہ جس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں یا کاپ اپ کر سکتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ اسٹریس میں نہیں جائیں گے. لیکن اگر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کے اندر ایک دم سے بہت زیادہ چینج آ گئی ہے اور ہماری کاپنگ کیپیسٹیز, اس انوائرمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیپیسٹی کم ہے, ہمارے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم اس انوائرمنٹل چینج کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکیں, دین دیٹ کازز اے لاٹ آف اسٹریس. یہاں پر ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے بات واضح ہو سکتی ہے کہ ایک صاحب جب کسی ایک جگہ پر جاب کرتے ہیں اور وہ پچھلے 5-6 سال سے وہاں پر جاب کر رہے ہیں تو ان کا ٹوٹل انوائرمنٹ بیلنسڈ انوائرمنٹ ہے.
उनका एक बॉस है, उनके नीचे चंद लोग हैं जिनके साथ मिलकर वो काम करते हैं. इट्स अ गुड हंकी डोरी हैप्पी कैंपर टीम जो मुख्तलिफ किस्म के अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते रहते हैं विद रेफरेंस टू देयर जॉब. हाउएवर वन डे द बॉस डिसाइड्स टू लीव. तो अब इन साहब के लिए उनकी एनवायरनमेंट के अंदर एकदम बहुत ज़बरदस्त ड्रास्टिक चेंज आ गई है. एक नए साहब आते हैं जिनका शायद इन साहब के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है या शायद वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बॉस हैं. तो अब ये साहब जो जॉब कर रहे हैं इनके एनवायरनमेंट का बैलेंस टोटली डिस्टर्ब हो चुका है. नाउ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स द स्टोरी कंटिन्यूज. अब इसके बाद क्या होगा? ये साहब या तो सोच सकते हैं कि मैं इस एनवायरनमेंट के साथ के ऊपर काबू पा सकता हूँ, मैं अपने नए बॉस के साथ एडजस्ट हो सकता हूँ, और अगर ये इस तरह से सोचते हैं, अगर ये सिचुएशन को इस तरह से अप्रेज करते हैं, द लेवल ऑफ और इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस विल बी लेसर. लेकिन अगर ये साहब ये सोचते हैं कि मैं इसके साथ कभी भी गुजारा नहीं कर सकता एंड इवेंचुअली आई एम लुकिंग टुवर्ड्स माई वे आउट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, देन दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट दिस जेंटलमैन इज एक्सपीरियंसिंग. सो दरअसल स्ट्रेस की जो अप्रेजल होती है ये इंसानों के बुनियादी एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं. इसीलिए मोटिवेशन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मोटिवेशन एक्चुअली एड्रेसेस द इशू ऑफ अप्रेजल. क्योंकि एक बात तो वन थिंग इज़ कांस्टेंट. एक बात बिल्कुल लाजमी है कि हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस डेफिनेटली आती जाएंगी. जो हालात आज हैं वो कल नहीं होंगे, जो हमारा रोल है आज है वो कल नहीं होगा. प्लस हम एज के मुख्तलिफ मराहल में से गुजर रहे हैं. वी आर ग्रोइंग अप, वी आर चेंजिंग. हमारी एनवायरनमेंट के अंदर बेशुमार चेंजेस आ रही हैं. आज के जो यंगस्टर्स हैं आज से 50 साल पहले के यंगस्टर्स से टोटली डिफरेंट सोच रखते हैं. सो चेंजेस आर गोइंग टू बी देयर ऑलवेज. दरअसल इंसानों के लिए बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि चेंज को किस तरह से एडजस्ट करना है और किस तरह से अडॉप्ट करना है. और जब हम चेंज के साथ एडजस्ट और अडॉप्ट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने एटीट्यूड की. एटीट्यूड प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर. वी कैन ऑलवेज, इट इज़ अप टू अस दैट वी सी द ग्लास हाफ फिल्ड or we see the glass half empty. So students, this point onwards, I would like to tell you about 3 different types of appraisals that we also discussed last time. And those 3 types of appraisals are, number 1, harm or loss assessment, number 2 is threat appraisal, and number 3 is challenging appraisal. जब एकदम से एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी ड्रास्टिक चेंज आती है जो शायद इरिवर्सिबल भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो, मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा ज़िलज़ला आ गया जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज डिसलोकेट हो गई, फैमिलीज के स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो गए. नाउ दिस इज़ अ मेजर हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, अ बिग ड्रास्टिक चेंज. और ये चेंज इतनी तेज़ी से आई कि इस चेंज के साथ कॉप करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, इसको समझना बहुत मुश्किल था. जब हम ऐसे थ्रेट में से गुजर रहे होते हैं तो हम हार्म और लॉस असेसमेंट करते हैं. इसका मतलब ये है कि जो डैमेज है वो ऑलरेडी हो चुका है. अब हम मुस्तकबिल में ये नहीं सोच रहे होते कि डैमेज मज़ीद आएगा. दरअसल हम ये सोच रहे होते हैं कि हम इस डैमेज के साथ ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे. बच्चे ये सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे. पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के बगैर ज़िंदगी किस तरह से गुजारेंगे. सो दिस काइंड ऑफ अप्राइजल actually prepares human beings to deal with the situation, the scenarios that have drastically changed. However, there is another type of appraisal that's called threat appraisal. Threat appraisal के अंदर अमूमन हम ये महसूस करते हैं कि कोई थ्रेट हमारी तरफ आने वाली है और इस थ्रेट को हम काबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब तक वो थ्रेट आती नहीं है, we remain in the constant stress of that particular threat. Just like I told you about the example of this hypothetical gentleman who was doing a job in an office, जिनके बॉस एकदम से चेंज हो जाते हैं, so he can get into the threat appraisal, which means that he's thinking कि मैं इस बॉस के साथ किस तरह से एडजस्ट करूँगा. He's actually thinking into the future कि मुस्तकबिल में अगर यहाँ पर मसाइल हो गए तो मुस्तकबिल में there is going to be a big bang between me and my boss, and that can lead me towards any scenario. So human beings are actually thinking about unpredictable scenarios in the future, and in this type of situation the stress intensity probably is a little less, but this is more chronic because it goes on happening and happening. It never stops. Now the last is challenge appraisal. When we are thinking about the future, we can always take a challenging point of view. We can always say, well, come what may, I will prepare for it, I will deal with the scenario.
Now this third type of threat appraisal is very very important, اور یہ وہ سچویشن ہوتی ہے جب انسان چیلنجز کو سامنا کرنے کی ہمت بناتے ہیں اپنے اندر. سو اسٹوڈینٹس جب انوائرمنٹ کے اندر چینجز ہوتی ہیں تو اس کے صرف دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں اس سے ڈیل کرنے کے. نمبر 1 کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو چینج کر دیں کسی طرح سے, یا پھر ہم اپنے آپ کو چینج کر دیں. جب ہم چیلنج اپریزل کی بات کرتے ہیں تو چیلنج مینس دیٹ وی آر پریپیئرنگ آور سیلوز فار اے بگ چینج, اے ویری بگ چینج. یا تو ہم اپنی انوائرمنٹ کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے, یا پھر ہم اپنی شخصیت کے اندر, اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر بہت بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے. سو اسٹوڈینٹس دیز ور دا 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف اپریزلس. اور یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میگنیچیوڈ آف اسٹریسر آلسو پلیز این امپورٹنٹ رول ان ہیلپنگ اس فائنڈ آؤٹ کہ ہم اپنے اندر چینج لے کے آئیں گے یا انوائرمنٹ کے اندر چینج لے کے آئیں گے. دراصل جب میگنیچیوڈ آف دا اسٹریسر انکریزز اپ ٹو extents of manifold that are manifold, then we might start thinking that let us adjust with the change. However, if the magnitude is less, we probably would start thinking that let us change the environment around us. However, you must always remember کہ یہاں پر بھی individual differences بہت important role play کرتے ہیں. بعض individuals اس چیز کے اوپر زیادہ زور لگا سکتے ہیں کہ میں اس environment کے اندر adjust ہو جاؤں گا, جبکہ دوسرے انڈیویجولس اس بات کے اوپر زیادہ زور لگا سکتے ہیں کہ ہم انوائرمنٹ کو چینج کر دیں گے. اسٹوڈینٹس یہ کچھ اسٹریس کے بارے میں ہم نے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو کے اندر بات چیت کی, لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسٹریس کی فزیولوجی کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں. دراصل جب ہم اسٹریس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر بھی مختلف قسم کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں. لائک ہمارا ہارٹ بیٹ تیز ہے, بلڈ سرکولیشن تیز ہے, الیکٹریکل ریزسٹنس کے اندر چینجز ہیں, ہماری سوچ کا پیٹرن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, ہم ایک دم سے چیزوں کو بہت تیزی سے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو سارے باڈیلی ریئیکشنس ہیں یہ بس ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں یا ان کی کوئی وجہ ہے؟ آف کورس یو آر ویری انٹیلیجنٹ, یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایکچولی یور باڈی از پریپیئرنگ ٹو ڈیل ود اے اسٹریسفل انوائرمنٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو آلسو انڈرسٹینڈ کہ فزیولوجی آف اسٹریس کیا چیز ہے, اور ہم فزیولوجی کے پرسپیکٹو میں اراؤزل کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. اراؤزل کا کانسیپٹ ہم نے کافی دفعہ ڈسکس کیا. اراؤزل از ایکچولی دیٹ اسٹرڈ اپ اسٹیٹ آف مائنڈ جس کے اندر یو آر اینگلنگ فار اے سرٹن ٹائپ آف ایکشن. اٹس ان دس اسٹیٹ آف مائنڈ یو آر ایکچولی تھنکنگ اور بینگ ڈریون ٹورڈز ایکشن ان آرڈر ٹو ڈیل ود اے سرٹن سیناریو ان دا انوائرمنٹ. اسٹوڈینٹس جب ہم اراؤزل کی بات کرتے ہیں تو arousal is very very important for us to deal with the environment. Arousal is a stirred up state of mind, اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایکسائٹمنٹ میں سے گزر رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بہت خوفزدہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں سے گزر رہے ہیں, یا آپ بہت غصے میں ہیں. لیکن وہ ساری اس کی ریزنس جو بھی ہوں, لیکن آپ کی باڈی کے اندر when you feel arousal, that means your body is actually preparing for certain kind of action. You are ready to break into action on a psychological level or on the physical level inside the world. So arousal is very very important for us to understand, because the first thing is arousal, and that prepares our body for the action in the real life to change the environment or to change ourselves. جب ہم اراؤزل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے اندر جو مختلف قسم کے گیجٹس لگائے ہوئے ہیں اللہ میاں نے, وہ سارے گیجٹس استعمال ہوتے ہیں, اور کچھ گیجٹس ایسے ہیں جن کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمیں اراؤزل کے ساتھ ڈیل کرنے میں مدد کرتے ہیں, یا پھر ہمارے اندر اراؤزل کریٹ کرتے ہیں. دراصل اراؤزل از آر ڈیفینس ویپن ٹو ڈیل ود دا چینجز ان آر انوائرمنٹ. Arousal prepares us to deal with the significant drastic changes in our environment. So there definitely should be a system inside our body that actually triggers this entire mechanism. What that system is? That system consists of number 1, different types of hormones, and number 2, different types of organs in the central and peripheral and autonomous nervous system. The nervous system gadgets that are involved over here are like hypothalamus, cerebral cortex, reticular formation, our limbic system, and autonomic nervous system. So all these organs that constitute different types of systems actually get activated to prepare us to deal with the scenario in the environment. So the bottom line is کہ
environment के अंदर जब change आती है और हम अपना कोई रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन रिएक्शन शो करने से पहले हम environment के अंदर जैसे ही चेंज आती है हम अपने अंदर भी कोई चेंज महसूस करते हैं, कोई चेंज हमारे अंदर फ़ौरन से पैदा होती है. दरअसल ये वो चेंज है जो अराउजल है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अराउजल को क्रिएट करने के लिए या अराउजल के मैकेनिज्म को ट्रिगर करने के लिए the reticular activating system in our central nervous system plays a very, very important role. Last time I showed you the slide of the reticular activating system, which is actually an area of neurons running through the middle of the medulla and the pons, and slightly beyond that is responsible for selective attention. RAS functions क्या है? Reticular activating system दरअसल जब एक्टिवेट होता है, ट्रिगर होता है, तो इसके फंक्शंस क्या है? इसका सबसे मेजर फंक्शन ये है कि ये ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को एकदम से एक स्टेट ऑफ रेडीनेस के अंदर ले जाता है. इसका मतलब है कि यू आर रेडी, यू आर क्विक फॉर द एक्शन. मिसाल के तौर पर अगर रेस शुरू होने वाली हो और सारे एथलीट्स जब अपने अपने पॉइंट के ऊपर आकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं, दैट इज द मोमेंट व्हेन दे आर एक्सट्रीमली रेडी फॉर द एक्शन. All they are waiting is to listen to the sound of the fire being shot, and then everybody would simply break into action. So ये increased state of readiness क्या है? Athletes अपनी position पे हैं, they are waiting for the shot being fired, and what is happening inside their body? RAS functions are triggered up, and everything inside the athlete is happening at the light speed. There is a great speed with which the entire body of athlete is responding to the total scenario, which means that there is increased metabolism rate. Metabolism is a process of breakage of the food particles and making energy out of that. Metabolism rate is very, very fast at that time. The heart starts beating faster because the muscles need a lot of energy. So the first thing is metabolism rate goes faster in order to create more and more energy. Now the blood supply also is very, very fast because the heart is beating very, very fast, so that the blood could be transferred towards the muscle. All of this is actually preparing the athlete to deal with the scenario. In this type of situation, there is constriction of blood flow towards the internal organs like kidneys or liver or such type of organs. इस किस्म के organs की तरफ blood flow या ब्लड सप्लाई कम होती जाती है और मसल की तरफ सप्लाई ज़्यादा जाना शुरू होती है. जब भी आप कभी स्ट्रेस में गए हों, आई वुड appreciate that you take time and notice that every time you are in stress, you actually go through similar type of responses inside your body. So this is the state of increased readiness, and increased readiness actually prepares you to deal with the action in the environment. यहाँ पर मैं आपको मिसाल देता हूँ इंक्रीज्ड रेडीनेस के बारे में कि एकदम से इंक्रीज्ड रेडीनेस किस तरह से इंसान को चेंज करती है. कभी आपके साथ इस तरह से हुआ है कि आप खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट होने से बिल्कुल यू barely escaped an accident? Did it ever happen to you? Of course, sometimes it happens with some individuals. जब कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है तो आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है. Let me help you build up an imagination. Let us imagine that you are driving your car on the main road, and there are many small roads that actually open up into the main road, and you just going through the main road, and as you're passing by a small road that opens into the main road, you see that another car on a very high speed is simply coming towards the main road, and there is a great chance that this car can bump into your car. Press the pause button here. Where are you? Your car is going to be bumped by another car. What type of possibility is this? Accident. Anything can happen. Car breakage, bodily damage, anything can happen. And your reflex action actually takes over your central nervous system. Yes? Suddenly you move very fast. Your body actually responds automatically, and you take a right shift towards the car, you turn it towards the right, and just find your way out of that. How are you feeling now? Something like this. Your heart is beating very fast. Your body is trembling. What are you going to do now? If you find out that other guy who was going to bump into your car, you probably would stop him. You will go to him, and what will you do?
You will yell at him, you will curse him, probably you will pull him and go physical. Anything can happen. Yes? You would not go physical in your ordinary life. But this is such a scenario in which you are simply not being able to help yourself out of this. This is the state of increased readiness. जब आप बहुत ज़्यादा readiness की state of mind के अंदर चले जाते हैं. Yes? लेकिन इसके साथ ही साथ एक दूसरी स्टेट भी होती है जिसके अंदर आपकी रेडीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. हैव यू एवर सीन पीपल और demoralized, depressed students who always think यार इस कोर्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस मुल्क के अंदर लोग डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, तो मैं भी नहीं पढ़ता और आई रियली डोंट लाइक दी स्टडीज़. आई मीन such people who really have been losing their morale. क्या जब इस किस्म के लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं, डू यू फील कि ये लोग लाइफ के चैलेंजेस को मीट करने के लिए तैयार हैं? यस? या आपको ये महसूस होता है कि इनके अंदर वो स्टेट ऑफ रेडीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है? यस. So you could always say that on one side of the continuum there is extreme readiness, which can be thought about with reference to the example of the accident that I just gave you. You could also think about those demoralized students who have simply lost their motivation. They are on the other side of the continuum. So these are the two sides of the continuum of extreme readiness and loss of readiness. Yes? Now, when we talk about readiness, readiness is actually arousal. Arousal is what? Arousal is that physiological state which prepares you for action. If you can bring this demoralized student up to a level where you have to prepare him to work hard for his studies, then what will you have to do with him? You will actually have to sit down with him, talk to him, and build up his level of motivation. Yes, you can do that. And actually, these days the country is progressing a lot. There are so many different companies coming in. And after you finish your degree, there is great chance that you will get the job. And by the way, you only get in life what you negotiate, not what you deserve. And you could tell him different stories that if you break into the action, then things will start happening with you. You start noticing that this gentleman, from totally naive or totally flat or dull state of mind, starts coming towards the middle of the continuum. Yes? The motivation level is being built up. Okay? When he comes in the middle, he says, okay, I will do that. And this gentleman starts studying. And a few days later, he tells you, you know what? I studied very hard, I did all of my homeworks, and I'm feeling very confident about my studies. There is a great chance that I'm going to get very good marks in my exam. Yes? Now, this gentleman in the middle of the continuum is able to perform. That means the state of readiness is not at the extreme level of the accident. That means the state of readiness is not at the lowest level where the morale has been totally dull and totally flat. Yes? Now, this particular student, if imagine from the middle level, he comes down to the level where there is extreme readiness, just like the one that you get out of the incident in which you just barely saved yourself from the accident. Over there, heart is beating very fast. That is extreme dangerous situation. If this student persists in that higher state of readiness, would he be able to perform? Of course not, because his body is simply going way out of his control. He's simply behaving mad. This is the state where you go angry, excited, you're afraid, some type of extreme emotion. So extreme readiness is extreme emotion. And in extreme emotion, can you concentrate on something? Yeah? So what is the bottom line? Very good. In order to perform, the arousal level needs to be maintained somewhere in the middle. And that is the state of readiness that prepares the human beings for action where the performance level is maximum. Students, to understand this point in a little bit more detail, let me give you another example. Soldiers go for the call of the duty when they have to save their country. Soldiers are prepared to deal with extreme circumstances, extreme scenarios. Their job is totally life-threatening. They could lose their lives in the heart of the action. So soldiers have to be prepared for extremely dangerous situations, extremely dangerous scenarios, like total emergency. Now, what kind of state of readiness should soldiers be trained to have
by their side all the time. Now, let us imagine the state of war. You must have seen some war movie in which you might have seen soldiers confronting each other, and those battle scenes are always full of horrible sounds. Firing ki awazein, bombs ki awazein, then human beings crying around, their body parts being ripped apart. Yes, that's an extreme scenario. Do you think this scenario is close to the scenario where the gentleman just saved himself barely from the accident? Yes, because the noise level is very high, because the threat to the life is also very, very high. So the soldier has to perform in a situation that demands a state of extreme readiness from his body. But we just found out that if the arousal level goes up to the extreme, then we cannot perform, isn't it? So that means when the soldiers have to be prepared, they have to be trained, तो उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो उस एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस के अंदर अपना अराउजल लेवल किसी तरह से मीडियम लेवल के ऊपर रख सकें. और ये सिर्फ उस वक्त ही पॉसिबल हो सकता है जब इतनी गोला बारूद और बम धमाकों की आवाज़ें और अपने साथ गिरते हुए और मरते हुए इंसानों के सीन के अंदर वो सोल्जर सिर्फ इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर सके कि व्हाट इज़ माई जॉब राइट नाउ. That's very, very difficult for the soldiers. And if he can concentrate on his job at that particular time, then he'll make a good soldier. So this soldier's example was kind of very extreme, but the real life is also like that. In real life, things happen very fast. You actually have to maintain that mid-level of arousal जहाँ पर आप perform कर सकें. So maintaining middle level of arousal is very, very important for people to perform. दरअसल मैक्सिमम परफॉर्मेंस उस वक्त हो सकती है जब आप मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट करते हैं किसी चीज़ पर. मैक्सिमम concentration, maximum focus actually takes you right inside the thing, and that's the moment where you actually can perform. Let us imagine a cricket match between Pakistan and India. Yes? Most of the times when cricket matches are played between Pakistan and India, these are two arch rivals, and such match carries great excitement for the spectators. People sitting in the stadium are simply feeling very excited and thrilled that both of these teams are confronting each other, they are up against each other. Yes? The environment is very exciting, very interesting for all of us who are actually not playing the match. And imagine if Pakistani cricket team loses, how do we feel? We feel very, very bad. We actually become very, very angry. We go so angry that we could say anything about our players. We could always come back and criticize like spitting fire out of our mouth. All the players who are playing that cricket match, they actually know that if they do not perform, the entire nation is going against them. They will be marked that you did not perform in this match against your arch rival. So the situation is very, very dangerous for the cricketer. Yes? Imagine yourself that you are one of the players in the Pakistan cricket team. Wow, that's a great imagination, even for the time being. But let us just imagine that. You're going to play the match, you are a great player, and the Pakistani cricket team actually depends upon you a lot, and you are entering inside the stadium, and everybody's watching you. There is crowd that is going so excited. You know that millions and millions of people are watching just to see what? You performing. How are you feeling now? Yeah, probably very, very nervous. Yes? If you don't perform, the consequences are very, very dangerous. Imagine what the players can do in such circumstances. Do they give in to the perceptions of the people? Do they give in to this kind of appraisal that everybody is watching them, and if they don't perform, then they are going to bump into very, very negative reaction. They might be kicked out of the team. They might get a lot of negative criticism being thrown upon them through the newspapers and television, all of that. If the player at that moment gives into this kind of appraisal, then what do you think? Is he going to perform? Of course. He cannot perform if he thinks simply about it, because this kind of perception would take him into an extreme state of readiness. And in extreme state of readiness, this player would not be able to perform. So what has he got to do? Just like the soldiers, yes? When the battle is on, when the people are dying, when the bombs are being exploded, when the fire is being spit, the soldier performs his job. He focuses, he concentrates. Similarly, this cricket player,
he simply has to concentrate over his skill, and he has to get into the mid-level of arousal. Yes, though the outbursts of extreme level of arousal would be helping him putting more might into his shots, but on the overall, this player has to maintain a middle level of arousal. Okay, so that is something which is very, very important for us to understand when we talk about stress. So now, if we go towards extreme, we will be stressed. If we go towards this extreme, we will again probably be stressed because there is nothing in life. It will be boring. We have to maintain the mid-level. Now, students, I told you earlier that the state of readiness, our body has a gadget for that, and that gadget is called reticular activating system. It is a reticular activating system that triggers all of these mechanisms. But you would say that student who actually had lost his motivation and morale, अगर हमने उसका morale वापस लेके आना है तो हम उससे कोई बातचीत करेंगे. Yes, so that's very, very psychological. If there is a physiological gadget inside our body that is responsible for performing this type of function, then there should be nothing wrong. But why do we have to talk to this student into making him motivated? Of course, the thing is that this state of readiness is partially biochemical and it is partially psychological. It is neurochemical as well as subjective. Have you ever noticed that if you are in a good mood, then you can perform well? If you are in a very sad mood, you cannot perform very well. Yeah? So both of these things actually go hands in hands, which is why we can always say that cognitive perception, cognition of the environment plays a great role in how would people perform or how would people act or behave in a certain type of environment. Now, imagine if the reticular activating system of an individual is damaged, what will happen? Because this system actually triggers a mechanism which prepares people for action. If the RAS is damaged, then people cannot be prepared for the action. And preparing for action actually requires the entire internal physiology to perform, the heart to beat faster, the metabolism going faster, all of that stuff which is very complicated. If the RAS is gone, the human beings are gone, the individual is gone. Individual would immediately go comatose and may eventually die. So students, arousal and stress, they go hands in hands. And the better way to understand stress is been through the arousal system, maintaining the state of readiness up to a certain level. Now, let us come back to the environment. Yeah? Just imagine the day you spend. You get up in the morning and you start performing different types of jobs. You perform different types of tasks. You run different types of errands throughout the day till you go back to sleep once again. I would like you to do one activity with yourself just to understand stress and just to understand that how environment plays a great role in giving us stress or helping us alleviate stress or helping us deal with the situation. Just try to find out कि आपकी environment के अंदर जब आप सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक आप जितने भी काम करते हैं उसमें से आप सिर्फ उन चीज़ों को पिन पॉइंट कीजिए जो आपको किसी किस्म की arousal level क्रिएट करती हैं आपके अंदर. Yes? मिसाल के तौर पर आप कॉलेज जाते हैं, you feel aroused after a certain time period. Maybe when you're preparing, getting dressed at home, you're not feeling that ready. But as you see the gate of your college or university, there's a state of readiness that starts emerging in your body. So all you have to do is to take a pencil and a paper with you throughout the day, and every time your heart beats a little faster, every time you feel a little bit excited, just write down what is the reason for that. Yes? What exactly are you doing? You are actually doing your environmental scanning. Environmental scanning means कि आप अपनी environment के अंदर उन सारी चीज़ों को पिन पॉइंट कर रहे हैं जो आपको किसी स्टेट ऑफ अराउजल में ले जाती हैं. ये चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती हैं. Like we discussed before, arousal prepares you to deal with negative circumstances as well as positive happenings around you. A gentleman can be nervous on the day of his wedding, and a gentleman can be nervous simply because his boss has given him very rough treatment.
yes? But the state of readiness is actually being built up inside human beings so that they could deal with the scenarios around them. Yeah. Okay, students, I hope you would do this exercise and you would find this exercise interesting. And next time when I come back to the lecture, I would appreciate that you have all those points jotted down in front of you so that we could discuss about them. Now, students, arousal has got a great relationship with goal-directed behavior. Yes? What is goal-directed behavior? Which means that you are behaving to attain a certain goal. Yes? You want to actually get a certain objective and you are designing your entire behavioral pattern according to that. Now, these days in the science of organizational development or in the science of organizational behavior, a lot of research is being done that how people can be aroused and how they could be taught to have more goal-directed behavior in their office lives, which means that eventually how the ordinary employees can become the best performers on the job. Students, as we discussed, that arousal is a state of readiness, and state of readiness means that if it could be extreme state of readiness, it could be very low state of readiness, but if it is maintained somewhere in the middle, then that gentleman would be able to perform and focus. So in the science of organizational behavior, different strategies and training programs are being imparted to the employees so that they could somehow maintain themselves in the mid-arousal level and they could perform. Like I told you, arousal has a goal-directed behavior. Yeah? A student feeling extremely demoralized means that he's thinking that his life is totally gone because he cannot study, he's not going to get a good job. You actually sweet-talk him into coming somewhere close to the mid-level. And when this student comes to the mid-level, what happens with him? He actually feels motivated. Motivation is what? Goal-directed behavior. Goal-directed behavior, how can you break into goal-directed behavior when you are aroused? The student who had lost his motivation was on the left side of the continuum. He was totally flat. You talk him into it, he comes towards the middle, and at a certain point, he starts feeling motivated, which means he starts feeling aroused. Arousal is always towards achieving certain objective in the environment. It is actually this state of readiness that prepares this gentleman to study, to undertake all those hours of studies, undertake all that mental planning that is required for him to perform and get good marks. So there is a strong connection between arousal and goal-directed behavior. And over here, environments are being designed in such ways that when people enter in those environments, they feel aroused. Would you like another experiment? Yeah. Imagine yourself going into a very plush supermarket. Yes, something really modern. It is a big place which is centrally air conditioned, and as you enter in that shopping mall, you find out all those beautiful shops with their attractive and flashy billboards and signboards that are compelling you towards purchasing different types of products. There is music going on in the environment, and there are nice, happy, attractive people in that environment. As you enter in that shopping mall, how do you feel? You feel aroused. The entire environment maintains a certain state of readiness in you. And that state of readiness would actually give you a goal-directed behavior. And what is that? That I would also want to buy something from this environment. And what do you mean by buying a certain thing in that particular environment? Buying a certain thing in that particular environment is that you are actually becoming the model who actually convinces you or compels you to purchase a certain product. Yes? In a shopping mall, you see lots of billboards, you see lots of attractive shops, you actually feel very pleasant. Actually, the entire environment of that shopping mall is built up in a way to give you mid-level arousal so that you could perform better, you could focus better, and you could do a better job at purchasing different types of products. So students, this was about arousal. This was about understanding arousal and finding out the connections between arousal and stress. And let me just give you, let me just cap it up all for you. This means that, first of all, something happens in the environment.
some change happens in the environment. हम उस environment के साथ किस तरह से deal करेंगे ये काफ़ी बात की स्टोरी है, लेकिन उससे पहले जैसे ही environment के अंदर कुछ change पैदा होती है तो सबसे पहले हमारे जिस्म के अंदर कुछ changes पैदा होती हैं। ये जो changes हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती हैं हम इनको arousal की state कह सकते हैं और state of readiness कह सकते हैं। दरअसल environment के अंदर अगर बहुत drastic changes होंगी, जिस तरह accident हुआ तो आप बहुत extreme state of readiness में चले जाएंगे। अगर environment dull है, flat है तो आप शायद बिल्कुल boring side के ऊपर चले जाएं। दरअसल हमें एक मिड लेवल स्टेट ऑफ माइंड अडॉप्ट करना है और एक मिड लेवल स्टेट ऑफ रेडीनेस अडॉप्ट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड a little bit about the complex dynamics of the stress and you could get some better control over dealing with the stress yourself. Now let us move forward and let me tell you about yet another mechanism that is called general adaptation syndrome. Just concentrate over the words general adaptation syndrome. When we are talking about stress, then stress is not something negative. Stress is something that is helping us adapt to our environment. This is our adaptive reaction in the environment, which means कि जैसे changes होती हैं हम अपने आप को change कर लेते हैं या environment को change कर लेते हैं ताकि एक better equation हासिल की जा सके between us and the environment around us, so that a state of balance could be maintained all the time. And since our objective is this, then general adaptation syndrome helps us understand this in much better way. Students, यहाँ पर general adaptation system बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि हमारे cerebral cortex के अंदर वो क्या structures होते हैं जो हमें अपने environment को adopt करने में, अपनी body को change करने में मदद देते हैं. So there is a part of the brain that is called cortex. And in the cortex, there are different structures that are actually responsible for those. Since our objective is not actually to understand nervous system or go into the details of nervous system, so I would just tell you the name of a particular gadget and what this gadget is actually doing. The first thing is our limbic system. This is the inside of the skull. This is our brain. Yes? And you could see that there are 4 important parts in the limbic system. Limbic system actually prepares us to deal with the changes in our external environment. It prepares our body. So the first thing to notice in the limbic system is thalamus. Thalamus is part of the forebrain that relays information from the sensory organs to the cerebral cortex. Cerebral cortex is the fatty structure that is on the outline of this picture. Cerebral cortex is responsible for complex thinking. So you see that thalamus actually relays information which is gathered up through the sensory organs and it transfers this information to the higher brain centers. Then there is hypothalamus, part of the forebrain that regulates the amount of fear, thirst, sexual drive and aggression that we feel. Different types of drives that we feel inside our body are actually located in the hypothalamus. The next is amygdala. Amygdala influences our motivation, emotional control, fear response, and interpretations of nonverbal emotional responses as well. So amygdala plays a great role in preparing us for different scenarios in our environment. And then finally, there is hippocampus. Hippocampus plays a role in our emotions' ability to remember and ability to compare sensory information to expectation. Complicated? Yeah. Let me make it very, very simple for you. This is very simple thing. The first thing you do is you use your sensory organs. Yes? And sensory organs are actually designed to perceive different frequencies of energies in the environment. Sensory organs convert the information into neurochemical energy. Yes? That is transferred to the requisite brain centers which are responsible for processing that information. Now there are lower order brain centers and there are higher order brain centers. In the lower order brain centers, it is more like the information is processed so that the higher brain order organs could understand that information and could make sense of that information. And then it gets into the higher brain center where the thinking is done, information is processed, and finally the orders are passed again to the entire body. And we have seen different structures that are localized in the brain which are responsible for all those functions that actually prepare us to deal with changes in our environment.
Yes, this is very important for us to understand the stress. The next important thing is our glands. Our pituitary gland is very, very important to perform different types of actions inside our body, something like beating of the heart, something like electrical resistance. All these things are actually performing different functions. So both of these complex structures in the brain and different types of glands actually combine, actually integrate with each other, and then that's how the man works in this life. So students, we do not have more time to go into the details of this. We would leave it on our next lecture because at this point of time we are running short of our time. We actually have to finish our lecture now. So जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम अपने next lecture के अंदर general adaptation syndrome को detail में पढ़ेंगे. I hope you would find it interesting as you would have found interesting today's lecture, of course. मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफ़िज़.